Hello, we are discussing today about the ends and functions of the state. In the earlier chapters, we discussed about the definition of political science, then the nature of political science, the scope of political science, and different approaches to political science, the traditional approach and the modern approach. In chapter 2, we discuss about the states, the elements of state, the difference between state and government, state and society, and state and association. And today we will discuss about the ends and functions of state. What are the goals of a state? What are the functions of a state? This is going to be the sequence. We'll discuss different views about state by different political thinkers. Then the idealism, the utilitarianism, and the individualism. The functions and ends of state are correlated, which can be better explained with reference to the views of different schools of thought. The early Greek philosopher regarded state as end in itself. Like state is the basic goal. So it is not a mean towards an end. Like it is not a medium through which people will achieve something. State is an end in itself, and state must be given more priority, and state must be regarded as the supreme body, and everyone should strive to strengthen the state. Like state is the body who must be the strongest one. And in modern sense, it is said that it is a mean towards an end. Like there must be a state to achieve something, and there are certain goals which a state actually set out to achieve. And Plato and Aristotle both consider that state is bound by an ethical end. It does not come into existence for the sake of preserving life, rather it endeavors for the maintenance of a virtuous life. Liberal thought of Locke and Rousseau, which they defined or which they explained in the social contract theory, it made a substantial contribution in changing such popular trends. So consequently, those concepts lost significance that regarded state as an end in itself. So state, this concept that is given by the Greek philosophers, Aristotle and Plato, those who said that state is an end itself, the state is the basic goal which the citizens and which are the inhabitants of a particular area must strive to achieve. So it has lost its significance after the Locke and Rousseau's substantial contribution in the changing concept of state. Idealism. The idealist theory of state revived the traditional Greek idea and regarded it as an end in itself. So idealist theory, basically it promotes the traditional Greek idea, the traditional approach of state, which was given by the Greek philosophers. And they regarded that state is an end in itself. When they call that state is an end, state is the basic objective or basic goal itself. It means that if state will be the strong, state will be powerful. So the people who are living inside, they will be more secure, more powerful, and more dignified and respected one. So it depends on the state. Like if state is, and definitely wherever there will be a state, it will bring things into
an order and in an organized manner. Hegel regarded individual wisdom as most untrustworthy. Like we cannot trust on the people. Like people cannot be given more power in a state. So because the supreme position is held by the state, because it has a will different from the will of the individuals. So hence it is the personification of the highest wisdom. Like it actually, the state represent a collective wisdom of the society, and it does not differ, it does not change with the changing situation of the changing condition of a state. It remains the same. It is the highest wisdom. It is a collective wisdom which is probably made by the group of the people, and it remains the same. And to sum up, we can say that Hegel upheld totalitarian view. Idealism is basically the totalitarianism, like the total control of a state, like everything revolves around the state. Like state will do everything for their inhabitants, for their citizens, and in regarding the nature of the state. Then comes utilitarian view, and the main exponents of this idea are Bentham, Austin, and James Mill. According to this theory, the state and its institutions are to be valued with reference to their utility. State and institutions, उनको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, उनकी उतनी ही कदर करनी चाहिए जितना वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं. अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो यूटिलिटेरियनिज्म में, यानी यूटिलिटेरियनिज्म को आप यूटिलिटी से जोड़ सकते हैं कि जितने फ़ायदेमंद होने का जो नुक्ता नज़र है कि स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हैं उतना आप उनकी कदर करें. अदरवाइज़ आप बाउंड नहीं हैं कि आप उस स्टेट को या उसके इदारों को कोई अहमियत दें. आप अपने तौर पे जो कुछ करना चाहते हैं आप करें. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल, यूटिलिटेरियन व्यू में वो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इंस्टिंक्टिवली endeavor to seek pleasure and avoid pain. The state therefore should enforce only such laws as can ensure happiness in the society. Because हर कोई उसको पता है, इंसान फितरती तौर पर ये इसी चीज़ की कोशिश करता है कि वो खुशी को अचीव करे, वो खुशी को तलाश करे, वो इत्मीनान को तलाश करे और वो जो दुख है, जो तकलीफ़ है उससे बचे. इसीलिए वो ये कहते हैं कि स्टेट को सिर्फ और सिर्फ वही लॉज इम्पोज करने चाहिए, वही लॉज उनको नाफिज करना चाहिए जो कि माशरे में खुशी का बायस बन रहे हों. And the founder of this theory believed in limiting the sphere of state action. तो जो लोग इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनमें बेंथम, ऑस्टन और जेम्स मिल, वो बेसिकली इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि स्टेट का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो कम से कम होना चाहिए. स्टेट को लोगों के मामलात या स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा मामलात वो लोगों पे छोड़ देने चाहिए और उनको जो वो करना चाहते हैं वो करना, जो लोग जो करना चाहते हैं वो अपने तौर पे ये फैसला करें कि वो क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, किस चीज़ से वो प्लेयर सीख कर सकते हैं और किस चीज़ से वो या किस दुख और तकलीफ से वो अवॉइड कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ इंस्टिंक्टिवली इन ह्यूमन नेचर. Adam Smith, he says that state should perform only the following three actions. अब वो कहते हैं कि सिर्फ यही तीन करने चाहिए स्टेट को, and then everything else must be left on the people, on the citizens,
कि स्टेट को ये चीज़ें करनी चाहिए, बाकी सब कुछ उसको लोगों पे छोड़ देना चाहिए, लोग फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या किस चीज़ को वो नहीं करना चाहते. Number one is the protection against external aggression. So definitely you cannot leave the protection of state on certain tribes, on certain group, on certain parties, and this requires an organized force which is well equipped, well organized, and well trained. So only that can protect a state against external aggression. और अगर कुछ लोगों पे छोड़ देंगे तो डेफिनेटली लोगों की चूँकि तरजीहात बदलती रहती हैं और वो वेल ऑर्गेनाइज भी नहीं होते, तो एक्सटर्नल एग्रेशन जो है वो उससे स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए एडम स्मिथ वो कह रहे हैं कि ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो, और इसी वजह से आजकल के जो स्टेट्स हैं, मॉडर्न स्टेट्स, वो हमेशा वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको हमेशा इंक्रीज करती रहती हैं और उसके लिए डिफरेंट मीन्स अडॉप्ट करती रहती हैं. तो मिलिट्री पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक मुल्क जो है वो प्रोटेक्टेड और सिक्योर समझा जाता है. The number 2 is enforcement of justice for ensuring equity and fair play. तो स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि वो इंसाफ का निफाज करे ताकि माशरे में बराबरी, इक्विटी और फेयर प्ले और एक बराबरी का जो मैदान है वो कायम रह सके ताकि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. और जो लोग माशरे में अच्छा किरदार नहीं निभा सकते, दे आर लैकिंग रिसोर्सेज, और फिर स्टेट के जो इख्तियारात हैं उस स्टेट को देखना चाहिए कि कहाँ पे कौन से लोग कौन सी ज़रूरत है उनकी, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि वो बाकी जो वेल ऑफ लोग हैं जो बेटर नेसेसिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं उनके बराबर उनको ला के खड़ा किया जाए. एंड नंबर 3 इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन नेसेसरी फॉर द जनरल वेलफेयर. तो ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो आम लोगों की फलाह व बहबूद के इदारे हैं वो उनको इस्टेब्लिश करे. तो अब बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि स्टेट को इस्टेब्लिश करने होते हैं. पुलिस एक लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी है, तो डेफिनेटली वो एक जनरल वेलफेयर के लिए काम करती है और स्टेट हमेशा उसी वक्त इंटरवीन करती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं विच हार्म्स अदर, विच इंजर अदर, तो डेफिनेटली फिर स्टेट को इंटरवीन करना होता है. वैसे स्टेट आम लोगों के मामलात में मदाखलत नहीं करती. इसी तरीके से जब आप लॉ को वायोलेट कर रहे होते हैं तो या किसी के राइट्स में इंक्रोच कर रहे होते हैं तो फिर स्टेट को डेफिनेटली इंटरवीन करना होता है. तो इसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. देयर आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एंड देयर आर द कम्युनिकेशन and there are some railways. The railway as an institution who provides the logistic and the traveling support to the people. Then Herbert Spencer, who is an English utilitarian, wanted to restrict the sphere of state to the maintenance of law and order only. So he says that government must take care of the enforcement of law. That's it. And the government, the state, it must not intervene in the affairs of the people. Other than this, if anyone is violating the law, he must be punished. He must be, brought before the court. And if anyone does something else other than that, so it must be left on him that whatever is good for him, he must do that, and state must have nothing to do with that. And in order to contract the idealist point of view,
The followers of utilitarianism went on the other extreme in respect of the role of the state. जैसे टोटलिटेरियनिज्म में या आइडियलिज्म में वो स्टेट को ही पावरफुल करना चाहते थे। वो समझते थे कि स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने भी ओवरऑल इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं उनको वो अंडरमाइन कर रहे थे। सेम लाइक दैट अब टोटलिटेरियनिज्म दूसरी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट का रोल कम से कम होना चाहिए और इंडिविजुअल को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए. As utilitarianists are credited for their stress on the welfare of the individuals and the promotion of public liberties. So, despite its specific advantages, utilitarianism has certain shortcomings as well. Like when we call that pain and pleasure signifies a mental attitude which cannot be measured in material terms. Like if we live on the people and we say that okay, लोगों पे है कि वो किस चीज़ से उनको खुशी हासिल होती है, वो खुशी के लिए कोशिश करते हैं, वो अपने लिए कोशिश करते हैं कि वो अपने इत्मीनान के लिए किसी चीज़ को हासिल करें, तो या वो अगर वो दुख या तकलीफ से बचना चाहते हैं तो आप इसको मटीरियल टर्म में आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि किसको किस हद तक तकलीफ होती है. सो यू कैन नॉट डू दैट. So secondly, this concept gives priority to individual well-being over the welfare of a society as a whole. Such an approach can prove harmful for our developing polity. तो अगर वो इंडिविजुअल की बात करते हैं, वो पूरी सोसाइटी की बात नहीं करते, तो पहला व्यू जो था आइडियलिस्ट व्यू, बेसिकली वो स्टेट को फोकस कर रहे थे कि स्टेट को ओवरऑल ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ओवरऑल जो पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो. तो जो इंडिविजुअलिज्म है, जो बेसिकली यूटिलिटेरियन व्यू है, वो इज क्वाइट डिफरेंट. They are emphasizing on the liberty of individuals and welfare of the individuals as well. The next is individualism. Individualism is also known as laissez-faire doctrine. And the exponents of individualism attach much sanctity to individual persons while underrated the role of state, as they wanted to restrict the sphere of its action. So individualism is actually a kind of utilitarian view. Like the utilitarian view, it actually underestimated the role of state and remained focused on the on public liberties. So individualism is very much like that they attached much sanctity to individual person and they underrated the role of the state. Like they want to restrict the sphere of state action. Like state must not intervene in every affair of the people. Like they consider state as a negative institution which takes away the liberties and it's incapable of performing welfare functions. The policy of non-interference, that is individualism, the laissez-faire mean that non-interference was justified on ethical, biological, economic, and political grounds. So what's the moral justification of non-interference? Like non-interference on the part of state is requirement of fair play and justice, so that individual may develop their capabilities according to their natural disposition. तो हर आदमी के अंदर अपनी ख़ास सलाहियतें होती हैं, तो वो उसका बेहतर इस्तेमाल तभी कर सकता है जब स्टेट उसको इस चीज़ की इजाज़त दे और स्टेट उसके मामलात में मदाखलत न करे. अगर स्टेट उसके मामलात में मदाखलत करेगी तो डेफिनेटली वो अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इजहार नहीं कर सकता.
دین بایولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ سیلف پریزرویشن ہے کہ ہر آدمی وہ اپنے لیے بہتر جو سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح طاقتور بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح سیکیور کر سکتا ہے. یہ ہر آدمی کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے. اس لیے self preservation is the driving force of all actions, while states interference is conscious effort to block the natural course of events. تو اسٹیٹ کا جو انٹروین کرے گی، اسٹیٹ جو انٹرفیئر کرے گی، سو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسی ایفرٹ ہوگی، ایک جان بوجھ کے ایسی کوشش ہوگی کہ جو فطرتی طور پر لوگ کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو وہ بلاک کر سکتی ہے. تو وہ جو لوگوں کے اندر ایک بایولوجیکل چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ طاقتور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک نیچرل کورس آف ایونٹ ہے جو کہ بلاک ہو جائے گا اسٹیٹ کی انٹرونشن سے. تھرڈ ون از پولیٹیکل ایسپیکٹ. لائک the founder of laissez-faire doctrine, like non-intervention doctrine, they are of the opinion that too much interference of state tends to promote bureaucratic trends in a society, endangering public liberties. When state will intervene too much, so definitely it will promote bureaucratic trends. Like آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا ایک پورا میکینزم ہے، ایک ہرارکی کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک وہاں پہ ایک سب کلرک بیٹھے ہوں، کلرک صاحب کو آپ کو اپلیکیشن دینی ہے، وہ پھر صاحب کسی وہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس جائے گی، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس جائے گی، پھر ڈائریکٹر کے پاس جائے گی، تو پھر اس کے بعد وہ پھر اوپر جا کے کسی جوائنٹ سیکرٹری کے پاس، کسی ڈپٹی سیکرٹری کے پاس، کسی سیکرٹری کے پاس. اور پھر یہ بیوروکریٹک ٹرینڈز ایسے جنم لے چکے ہوتے ہیں کہ جہاں سے پھر آپ آسانی سے چیزوں کو منظوری بھی نہیں کروا سکتے، ان کو پاس کوئی بل پاس کروانا وہ پاس بھی نہیں کروا سکتے. اور پھر معاشرے کے اندر حالانکہ یہی کام وہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھا ہی سیکرٹری صاحب کے پاس جا کے بھی کروا سکتا ہے، لیکن بیوروکریٹک ٹرینڈ سے ہے کہ آپ کو نیچے سے اوپر تک ایک فائل کو آنا ہے، اور بہت ساری فائلیں لوگ ایک خاص موقع پہ اپنے خاص مقاصد کے لیے روک بھی لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ پبلک لبرٹیز کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اس کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے کہ لوگوں کی آزادی سے ختم ہو جاتی ہے اگر اسٹیٹ بہت زیادہ انٹرفین کرے گی. تو یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروموشن آف بیوروکریٹک ٹرینڈز ہیں اسٹیٹ کی بہت زیادہ اگر انٹرونشن ہوگی تو. پھر اکنامک آؤٹ پٹ یہ ہے کہ the supporters of this theory especially used it for ensuring market-oriented economy based on free competition. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی ہونی چاہیے، مارکیٹ میں جو کچھ لا رہے ہیں لوگ ان کو لانے دیا جانا چاہیے، جو لوگ خرید رہے ہیں ان کو خریدنے دینا چاہیے، ایک فری کمپٹیشن ہونا چاہیے. کوئی اچھی چیز بنا کے لا رہا ہے تو وہ جس قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے وہ اس کی قیمت پہ اس کو بیچے گا، اور جو خریدنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے، اور وہ اچھی چیز خریدنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ پے کرے گا، اور اگر وہ اچھی چیز نہیں خریدنا چاہتا تو اس کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو وہ زیادہ کم لاگت والی چیز خریدے گا. تو مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی یہ ہے کہ مارکیٹ جس حساب سے اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہتی ہے اسی حساب سے ڈیفینیٹلی جب کسی چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ چیز مارکیٹ میں سیل کرے. تو جب زیادہ اس سے لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ایک کمپٹیشن ہوگا، لوگ اچھی چیز مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، کم قیمت چیز مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیل ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جو وہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں فار دیئر پروفٹ وہ زیادہ سے زیادہ وہ اچیو کر سکیں. اور یہ بیسیکلی پاسبل ہے فری کمپٹیشن پہ لوگوں کو کھلا مقابلے کا موقع دیں، جو جس حد تک جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اب there is criticism on non-intervention doctrine. It is that it is the underestimation of the capabilities of state, because it promoted the individual liberties and the public liberties, اور state کا جو رول ہے اس کو اس نے بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے.
लेकिन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट उन्होंने अपना जो लीगल एक्शन का स्फीयर है, वो दायरा है, उसको मुख्तलिफ जो सिमत है उस तरफ बढ़ा दिया है। किस लिए? फॉर द परसूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। जो कि एक वेलफेयर स्टेट जो है वो हमेशा सिर्फ ऐसे कानून ही बनाती है जो कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी के लिए हो। तो उसका लीगल एक्शन, हम हर चीज़ अगर लोगों पे छोड़ देंगे तो सो डेफिनेटली फिर मोनोपोलिस्टिक अप्रोच जन्म लेती है। मार्केट में लोग जो मर्जी चीज़ जिस तरीके से वो चाहें वो आप बेच सकते हैं। वो पॉलिटिकली वो चाहे, चूँकि एक ह्यूमन, वो कहते हैं ह्यूमन विजडम इज़ अनट्रस्टवर्दी, तो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए स्टेट का जो स्फीयर ऑफ लीगल एक्शन है उसको उसने इन्हांस कर लिया है। और there is a wrong assumption that laws of the state takes away the liberties of individuals. Laws always provide individual equal opportunities to all alike so that they may rise to their fullest height. तो बुनियादी तौर पर ये कंसेप्ट भी गलत है कि स्टेट जो कानून बनाती है वो सिर्फ इसलिए बनाती है कि वो जो अफराद हैं, जो एक कौम के लोग हैं, उनकी आज़ादी को ख़त्म करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट का बुनियादी मकसद भी वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है, और जितने भी वो लॉ बनाती है उनका मकसद भी वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। वो कभी भी ये कानून इसलिए नहीं बनाती कि वो लोगों का जो नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है उसको रोके। तो स्टेट हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर एक को देने की कोशिश करती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर की उम्मीद रखें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gmnoorani@aol.com. For next lecture we'll meet again. Till then, bye bye.